जैसे कि बाइबल धर्मशास्त्र में लिखा है कि ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसी तरह उर्दू में लिखा है कि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे बीच में डॉक्टर नासिर सिद्दीकी हैं और हम इनके बारे में सुनेंगे कि क्यों ये यीशु मसीह के पीछे चलने लगे, कौन सी ऐसी घटना इनके जीवन में हो गई। सो आइए मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर Nasir Siddiki. I welcome you in the name of Jesus. Thank you. Please tell us about your experience, how you came to the Lord. Well, Pastor, I was brought up in a very strong Muslim family. My ancestors come back from the original Abu Bakr Siddiq, and that's how we ended up moving to London, England. मेरा जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ और हमारी जो पीढ़ियाँ चलती हैं वो अबू बकर सिद्दीकी से शुरू हुई हैं। And so we were living in London, England. और हम लंदन इंग्लैंड में रहते थे। And I really felt that I needed to come to Canada. और मैंने सोचा कि चलो मैं कनाडा जाता हूँ। I heard that Canada was the land of milk and honey. मैंने सुना था कि कनाडा जो है दूध और जहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं वो देश है। I was going to tell you I never found the milk or the honey, but I married my honey 12 years ago. मुझे यहाँ पर दूध की नदियाँ और शहद तो नहीं मिला, लेकिन I married my wife, मैं अपनी वाइफ से जिसको हम हनी अंग्रेजी में बोलते हैं उससे शादी की 12 साल पहले। So I came here very young and very ambitious, wanting to become successful. जब मैं यहाँ आया तो मैं बहुत ही उत्साहित था, जवान था और आगे ज़िंदगी में बढ़ना चाहता था। I started to climb the corporate ladder in a big corporation in downtown Toronto. मैं और तरक्कियों की सीढ़ी पर चढ़ना चाहता था और मैं डाउनटाउन टोरंटो में रहता था। But I found out that when you climb the corporate ladder, you never get to the top because someone else owns the ladder. लेकिन मैंने यहाँ के देखा है जब तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो जब उत्साहित होके और कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ते हो तो कोई सीढ़ी पकड़ने वाला कोई और ही होता है। So I figured I must start my own ladder. तो मैं सोचा मैं अपनी सीढ़ी खुद ही बनाऊंगा। I started many businesses and most of them failed. मैंने बहुत सी बिजनेस शुरू की और सब फेल हो गई। But one of them, the last one, became quite successful. लेकिन जो आखिरी जो थी वो कामयाब हो गई। And in about a year and a half, I achieved the highest position in this company. साल डेढ़ साल में मैंने इसमें टॉप पोजीशन अपनी ले ली। I was making a 6-figure income. मैं 100,000 की सैलरी में कमाता था। And you would think that having worked so hard to become successful, I would be happy. आप सोच रहे होंगे कि मैंने जब इतनी कामयाबी हासिल कर ली तो मैं बहुत खुश हूँ। But instead of being happy, there was something missing in my life. I was depressed. लेकिन खुश होने की वजह से मैं एक उदास हो गया और डिप्रेशन में चला गया। In fact, the company that I was a part of rented the Roy Thompson Hall just to have my promotion. और मुझे प्रमोशन देने के लिए कंपनी ने रॉय थॉम्सन हॉल को रेंट किया। So in front of thousands of people, the company moved me to the highest position. और कंपनी ने मुझे इतना हजारों लोगों के सामने इज्जत दी कि मुझे हाई पोजीशन पर मूव कर दिया। But as I said, instead of being happy, I was depressed. It was an anti-climax. There was something missing in my life. ऐसा लगता था कुछ खो गया, इतना सब कुछ पाने के बाद भी मुझे लगता था कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ। I thought that money or financial success would bring me happiness, but there was still something missing. मैं सोचता था कि धन दौलत और कामयाबी मुझे खुशी बख्श देगी, लेकिन मुझे लगता था कुछ फिर भी मिसिंग है, खोया हुआ है। And you know, Pastor, I went to all different places. I went to a place where they tell you your horoscope. I thought that was the answer, but they did not have the answer. मैं बहुत सारी जगहों पर गया जहाँ लोग हॉरोस्कोप बताते थे, भविष्य बताते थे, लेकिन वो जवाब नहीं था। I even went to a place where you drink the tea and they tell you your future from the dirty old tea leaves, but they didn't have the answer. मुझे ये भी बताया गया ऐसी जगह है जहाँ अगर तुम चाय पियोगे तो उसमें से देख के बता सकते हैं कि आपका क्या भविष्य है। So still searching, I got very well. Actually, I just met Anita at that time. I just met her 2 weeks before. और 2 हफ्ते पहले मैं एक अनीता से मिला जो मेरी वाइफ हो गई बाद में। And just when I met her, she invited me to her home to meet her parents. So उसने मुझे अपने घर बुलाया अपने माँ बाप से मिलने के लिए। And after having dinner, I was sitting on the couch talking to her mother. और मैं डिनर के समय
काउच पे बैठा हुआ था और उसकी माँ से बात कर रहा था. And in the middle of a sentence, Pastor, I fell asleep. और बात करते करते मैं बिल्कुल सो गया. This is not a good way to impress people. ये इम्प्रेस करने का अच्छा तरीका नहीं है. And I thought, what is wrong with me? Why am I falling asleep? मैं सोचने लगा कि मुझे क्या गड़बड़ हो गया, मैं सो क्यों गया बात करते करते. I had a little rash on the side of my neck. मेरे यहाँ नेक की तरफ एक छोटा सा रैश हो गया था. So I went to East York Hospital. मैं ईस्ट यॉर्क हॉस्पिटल में गया जो टोरंटो में है. In Toronto, and they gave me some Tylenol pills to take. So उन्होंने मुझे टाइनॉल की गोलियां दे दी लेने के लिए. They said if you take these before you go to sleep, you will be fine. उन्होंने कहा तुम ये दवाइयां सोने से पहले लोगे तो तुम ठीक हो जाओगे. I went back to my apartment. मैं अपने अपार्टमेंट में चला गया. Took the pills and went to sleep. और मैंने दवाई ली और सो गया. I woke up in the middle of the night. I wanted to go to the bathroom. मैं रात को उठा कि मैं वॉशरूम जाना चाहता था रात को. I walked into the bathroom, and as I stood in the bathroom, all of a sudden, just like that, I passed out on the floor. जैसे ही मैं वॉशरूम में गया तो उसी समय में ऐसा हो कि मैं एकदम गिर पड़ा अपने वॉशरूम में. I woke up on the floor and started to stand up again. और मैं फिर उठना मैंने फर्श से उठना शुरू किया. As I stood up, I passed out and fell on the floor a second time. मैं उठा और फिर दूसरी दफा गिर गया. When I woke up on the floor, I decided not to try and stand. जब मैं पड़ा हुआ था तो मैंने दोबारा उठने की कोशिश नहीं करी. I crawled back to the bedroom. मैं घुटनों के बल अपने बिस्तर की तरफ गया. And as I looked in the mirror, those blisters had become a rash half-inch in size on the side of my face. और जब मैं देखा मिरर में तो मेरे जो ब्लिस्टर थे वो 1 इंच के हाफ इंच के गोले से बने थे, छाले से बने हुए थे. I was in so much pain और मेरा इतना दर्द था that it felt like someone put petrol on the side of my head. ऐसा लग रहा था किसी ने मुझ पर गैसोलीन डाल दिया है. And put a match to it, and my skin was burning up. और माचिस लगा दी है और वो ऐसा जल रहा था. I did for the first time wrote my will because I didn't know if I was going to live. So मैंने पहली दफा अपनी इच्छा पेपर पे लिखनी शुरू कर दी, विल लिखनी शुरू कर दी क्योंकि मैं जानता नहीं था क्या होगा. I called Anita and asked her to come and take me to the hospital. So मैंने अनीता को बुलाया कि मुझे आके हॉस्पिटल ले जाए. We drove 5 miles an hour because every bump on the road I'm screaming in pain. हमें इतने आस्ते जाना पड़ा 5 मील की रफ्तार से क्योंकि जब भी गाड़ी चलती थी तो मेरे छाले जो थे बहुत दर्द करते थे. We went into the emergency section of Toronto General Hospital, and the doctors diagnosed it as the worst case of shingles ever recorded in that hospital. So जब हम वहाँ गए इमरजेंसी में तो डॉक्टर ने ये केस इस तरह से बताया कि ऐसा खतरनाक है और एक ही है, बहुत कम लोगों को होता लेकिन बहुत ही भयानक किस्म का शिंगल्स की बीमारी थी. Now, shingles is a virus, Pastor, of the nerves. It is the nerves burning the skin from the inside out. ये हमारी नाड़ियों को जलाती है और ये स्किन की बीमारी होती है जो जलकर छालों के रूप में बन जाती है. I was in so much pain that I took a metal stretcher and I was trying to break it. मैं इतने दर्द में था कि वो मैंने मेटल का स्ट्रेचर पकड़ के उसे तोड़ना मांगता था. They gave me an injection to calm me down. मुझे शांत करने के लिए उन्होंने मुझे इंजेक्शन दे दिया. And they prepared a room that day for me to go. और उन्होंने मेरे लिए वहाँ जगह बनाई उस रूम में जाने के लिए. I was put to sleep in that room on the 8th floor of Toronto General Hospital. और मुझे सोने के लिए 8वें मंजिले पर ये बेडरूम दिया. I woke up in the morning and I wanted to go to the bathroom. मैं सुबह उठा और वॉशरूम जाना चाहता था. As I walked into the bathroom जैसे ही मैं वॉशरूम में गया and opened the door